कोई डाउट है? If you have any doubt, any question, any query, you can raise, you can ask question. Sir, one doubt is फेवरेबल इंक्लूजन क्या है? देखो, एक इंक्लूजन जो है ना अच्छी चीज है, इंक्लूजन अच्छी चीज है. मान लीजिए इंक्लूजन एक अपोजिट वर्ड है एक्सक्लूजन का. Exclusion means you are excluding something. Yeah? And a healthy democracy includes, a healthy market includes, a healthy class includes everyone. Right? मान लीजिए हमने कोई 2-4 बच्चों को बुला लिया यहाँ पे, आइए और आप पढ़िए. Right? तो inclusion है, inclusion is always good for any country, any society. But inclusion should be favorable one. Favorable one means it should not be unfavorable. For example, woman has included in the market. It is a welcome steps. Woman has been included in the market or in the state assembly or in the parliament. It is welcome steps. But it does not mean woman should be harassed. Right? Or, equal pay for equal work should not be given to woman. Right? Woman should get the equal payment. Yeah, which favors that group. अगर 5 स्टूडेंट को आप यहाँ पर इंक्लूड कर ले रहे हैं, तो इट मींस देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट टू दोज स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं कि आप बायसनेस, आपको नोट्स दूं मैं उनको नोट्स ना दूं. समझ रहे? सो देयर शुड बी इंक्लूजन, बट इंक्लूजन शुड बी फेवरेबल वन. राइट? ये 90 में डिबेट था कि इंक्लूजन इज अ गुड आइडिया फॉर एनी डेमोक्रेसी. अमृत सिंह ने इसको रिस्पॉन्ड किया कि इंक्लूजन इज अ गुड आइडिया, बट इंक्लूजन शुड बी फेवरेबल वन. Women should be included, or labor should be included in the market or private. If you look at 1990 and onwards, private market has been expanded in India. Because of liberalization, privatization, and globalization. So market should include all the strata of the society. For example, it should include scheduled caste, it should include scheduled tribe. बट ऐसा नहीं कि जो लोअर लेवल का काम है केवल उनको एससी को दिया जाए. हाँ, एसटी को इसलिए इंक्लूड किया जाए कि उनसे कोई ऐसा काम कराना है जो अपर कास्ट नहीं कर सकता. नो, राइट? एवरीवन शुड गेट एज पर दे डिजर्व, देयर मेरिट. राइट? वो काम कोई भी कर सकता है. ऑफिस बॉय का काम कोई भी कर सकता है. ऐसा नहीं कि ऑफिस बॉय और सैनिटेशन वर्कर पे केवल एक कम्युनिटी को लगाया जाए, क्योंकि वो राइट. सो इंक्लूजन तो होना चाहिए मार्केट में, राइट, या कहीं पर भी. बट वो इंक्लूजन क्या होना चाहिए? फेवरेबल होना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है? इंक्लूजन अनफेवरेबल भी होता है, एंड दैट लीड्स टू फर्दर एक्सप्लॉयटेशन. व्हाट आइडिया? और कोई सवाल है तो पूछिए. बस done? Okay. How many of you keep fast? Navratra is going on, right? आप रखते हो? फिर इतना बड़ा बॉडी है, कैसे करते हो? मेंटेन कैसे करते हो? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगती है. मैजिक, मिराकल है. खुशबू, okay, you are there online, huh? फास्ट यूपीएससी के लिए रखता है कि मैं फास्ट रखता हूं. धार्मिक, गुड. I don't, sir, today is कन्या पूजन, तो आप कन्या पूजेंगे आज घर पे? अच्छा, we'll try in future. No, see, it's a personal. Religion or belief is a personal one, right? One should keep fast, one should not keep fast. ठीक है? One should eat non-veg, one should not eat non-veg. अगर आप बंगाल रीजन में जाएंगे तो
during puja there is a lots of non-veg, है ना? मछली साउथ में तो क्या होता? नवरात्र अक्टूबर में होता। दो ही नवरात्र होते, कहीं पर 4 बार भी होते, सही बोला मैंने। बट आश्विन का जो नवरात्र होता है वो हर जगह होता है, अक्टूबर में जो होता है उसको अभी चैत्र मंथ है ना, चैत्र, राइट, इट्स कॉल्ड चैत्री दुर्गा, राइट। वो आश्विन का दुर्गा हर जगह मनाया गया। यस शिवानी। नो सर, बंगाल का बोल रही थी, वहां भी कोई नॉनवेज नहीं खाता है ड्यूरिंग नवरात्रा, लेकिन सिर्फ घर में। नहीं सर, सिर्फ घर में नहीं बनता है, बाकी बाहर जाके खा लेते हैं वो लोग। अरे नहीं, घर में प्रसाद चढ़ता है मछली का। अच्छा, मेरी एक है मासी, तो बोले थे हम लोग नहीं खाते ना, घर में नहीं बनाते, बाकी पूजन के बाद बाहर जाके खा के आते हैं। उनका लिंक होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। हाँ, वो यही मध्य प्रदेश से है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। अदरवाइज बंगाली लोग इवन बाकायदा प्रसाद चढ़ता है मछली का। मछली का, जहां बंगाली वहां मछली। है ही। किसी ने विक्की द डोनर देखा है मूवी? हाँ, वो बंगाली आयुष्मान खुराना का, बंगाली और पंजाबी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और पंजाबी की मम्मा बोलती है क्या बंगाली से तुमने शादी करने के लिए सोचा, हमेशा सरसों तेल और मच्छी मच्छी करती रहेगी। टुडे दुर्गाष्टमी तो बंगाली और मछली बोथ आर सिनोनिमस। जहां पे बंगाली होगा वहां मछली मार्केट होगा ही होगा। No, I'm not Bengali. I'm from Bihar. But in our region also people eat lots of fish, and during Navratra there is a Bali Pradhan called Bali Pradhan, right? So there we eat mutton also. मटन चलता है, राइट। बट आप आओगे उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, तो वहां पर बड़ा ही ऑस्पिशियस है, खुद भी नहीं खाएंगे और दूसरे को भी नहीं खाने देंगे, राइट। अभी तो कम डिबेट चल रहा है, लास्ट ईयर 2022 में बहुत डिबेट चल रहा था, राइट। इवन दिल्ली गवर्नमेंट हैज बैंड नॉन-वेज ड्यूरिंग द नवरात्रा, राइट। तो ये हुआ था। एनीवे, बैन नहीं करना चाहिए, जिसको मन है खाओ, जिसको मन नहीं खाओ। फोर्स नहीं होना चाहिए किसी को लेकर के, खाने को लेकर के भी नहीं और ना खाने को लेकर के भी नहीं। पता है, there was a one author or a scholar, philosopher who said either you give me liberty or death. Liberty is so auspicious public good for any country, for any individual. One can do best when he is free, right? Then one can do when he is free, right? And if you see the country which promoted liberty is a prosperous country. A family which promoted liberty within the family is a prosperous family, happy family. और जिस फैमिली में लिबर्टी का कांस्टेंट होता है ना, वो घुटन होती है लिबर्टी कांस्टेंट करना। इट्स लाइक स्टैग्नेंट पूल, जहां पर फ्लो ही नहीं होता है, नैरोनेस होता है, राइट। लिबर्टी तो होना चाहिए। चलिए उसी लिबर्टी के, फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यस, राइट टू फ्रीडम, दैट इज राइट टू फ्रीडम ना। And there is a article 19 to 22. There are 4 articles devoted to freedom, right? And if you there are 4 articles that is devoted to freedom, and if you look at article 19 clause 1, right, talks about 6 types of freedom. Article 19 clause 1 provides 6 types of freedom. Yeah, 19 clause 1 provides 6 types of
freedom. A, freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. B, freedom to assemble without arms. Freedom to assemble without arms. C, freedom to form association. Freedom to form association, union, or cooperative society. Freedom to form association, union, and cooperative society. Now you can see the cooperative society. This was added by the 97th Constitutional Amendment Act. So एक नोट लिख लेना यहाँ पर, देखिए नोट. Now freedom to form cooperative society, the freedom to form cooperative society was inserted by the 97th 97th CAA. So you can see Article 19 Clause 1 provides 6 types of freedom. Freedom of speech and expression, freedom to assemble without arms, C, freedom to form association, union, and cooperative society. Write it. लिख लिया? Once you're done, let me know. Sabila, Shivani, Shreya. Khushbu. Done? Now D, right to move freely. Freedom to move freely throughout the territory of India. Throughout the territory of India. E, freedom to resettle. Resettle and reside in any part of India. Freedom to resettle and reside in any part of India. Sorry, back करूं? लिखिए 97 CAA. ठीक है? Now F, देखिए omitted. जो F क्लॉज था वो omit हो गया था. Omitted by 44th CAA. Yeah.
यहां पर था क्या? No, there was a freedom to acquire and hold property. तो जो F पार्ट है वो ऑलरेडी हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. 44th CA. Yeah, 44th CA. Basically, it was transferred to the legal right. Now, G, freedom to practice any profession. Freedom to practice any profession or occupation right, or business or trade. ये है या or trade. Freedom to practice any profession, occupation, business or trade. Anything that you are free to do. है ना? Now, if you look at Article 19(1), you can see it is a 6 set of rights. You can see right to freedom of speech and expression, right to, assemble peacefully without arms, right to, resettle in any part of India, right to form union, right to form association. These all are essential in any democratic state. नहीं, these all rights are very, एक लाइन लिख लीजिए, write it, लिखिए. Article 19(1), Article 19(1) recognizes a set of freedom. Article 19(1) recognizes a set of freedom that is essential for a dignified life. Essential for a dignified life. In any democratic state, a set of freedom is required so that citizen can develop their full potential. The citizen can develop their full potential. These rights are called democratic rights. These rights are called as democratic rights. Sir, earlier there was 7 set of rights and one set has been. Yeah, earlier there was a 7. Now 1 was transferred, omitted, right? Yes. Now there we have 6 rights in Article 19 Clause 1. The right which has been omitted has been moved to Article 300. Yeah. Yes. Yeah. Now you can see that Article 19(1),
talks about 6 set of rights. But what about Article 19 Clause 2 to 26? लिखिए. Next point. Article 19 Clause 2 to Article 19 Clause 6 mentions reasonable restriction. Reasonable restrictions imposed on freedom. तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 क्या कहता है, क्या बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम, राइट? हाँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 यही कहता है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, राइट? नाउ यू कैन राइट देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शंस. या अच्छा, ओमिट क्यों कर दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी के कारण. अब क्या है ना, बड़े बड़े राजा लोग थे, आपको पता है, जमींदार बड़े लोग थे, राइट? अब जमींदार थे, उनकी प्रॉपर्टी थी. अब ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1F कहता था कि यू हैव टू राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी. आर्टिकल 31 था, वो कहता था कि एवरी पर्सन हैव राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट था. इसके वायलेट होने पे आप कहां पहुंच जाते? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. स्टेट ने क्या किया? लैंड रिफॉर्म किया. लैंड रिफॉर्म क्या चाहता था? टू एक्वायर लैंड एंड डिवाइड प्रॉपर्टी टू एंड प्रोवाइड प्रॉपर्टी टू लैंडलेस. अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसके बीच में? फंडामेंटल राइट में, स्टेट के बीच में, राइट? अब ये स्टेट लैंड रिफॉर्म क्यों कर रही थी? क्योंकि डीपीएसपी कहता था कंसंट्रेशन, हाँ, सोशलिज्म करेगा, वेलफेयर स्टेट होगा. अब ये लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते थे बार बार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. पहली बार बिहार पटना हाई कोर्ट has declared Bihar Land Reform Act as illegal because it violated rights. Article 19(1)(f), right? And subsequently many high court declared the Land Reform Act as illegal, and there is a conflict between. बाद में क्या हुआ कि इसको डिलीट ही कर दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया. ये डिबेट आए ही नहीं कोर्ट में, इसीलिए. ठीक है? देखिए, देयर कैन बी several grounds. There can be following grounds. There can be following grounds for which reasonable restriction can be imposed. Reasonable restrictions can be imposed. There can be following grounds, or you can write there are following grounds for which reasonable restrictions can be imposed. देखिए, पहला लिख लीजिए पहले. There are, यहाँ can से अच्छा होगा, there are following grounds for which reasonable restrictions can be imposed. First, sovereignty and integrity of India. Sovereignty and integrity of India. So, reasonable restrictions can be put
on right to speech and expression, or on your freedom to movement in favor of sovereignty and integrity of India. दूसरा है security of the state. Security of the state. Then third is, friendly relations with foreign state. With foreign state. Fourth, public order. Fifth, decency and morality. Yeah, decency and morality. Sixth, contempt of court. Contempt of court. Then 7 is defamation. राहुल गांधी को जो सजा हुई है डिफेमेशन के कारण, डिफेमेशन. देन 8th इज इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस. वायलेंस. लेट मी टेल यू, जो अमेरिका में है ना, अमेरिका में इन द यूएस ऑल्सो देयर इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इन यूएस there is only one ground on which there is a restrictions on freedom of speech and expression, and that is incitement of violence. Huh? It should be peaceful. Yes. Your speech and expression should not lead to the violence. फाइन. हाँ, करते हैं, बट मैं बता रहा हूं कि यूएस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट इंडिया में है. नहीं, इंसाइटमेंट मतलब होता है कि वायलेंस अपने आप कुछ बोले और झगड़ा हो जाए. ऐसी बानी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, ऐसा नहीं बोलिए. Decency मतलब, you should be decent, you should be polite, you should be very. Decency मतलब थोड़ा सा decent होना चाहिए. Decency मतलब सबीला. ऐसा नहीं कि वो जो कौन था, वो नंगा दौड़ रहा था गोवा के बीच पे. That was that Milind Soman. Have you heard about that? Milind Soman, have you heard that actor? Milind Soman का नाम सुना है? मिलिंद सोमन एक्टर का नाम नहीं सुना है? But anyway, he was, walking, or he was jogging naked on the beach of Goa. It is a violation of. Now he has become old man, yes, Avinav, but he was क्या बोलते हैं उसको, फैशन में he was very popular. मिलिंद सोमन. गोवा में एक थी सम पांडे. हैव यू हर्ड अबाउट पूनम पांडे? पूनम पांडे के बारे में सुने हो? शी इज वेरी पॉपुलर ड्यू टू हर एक्सपोजर, राइट? बट she was arrested, पूनम पांडे, and her husband also. अभी बात करेंगे हम लोग बाद में, राइट? कल्चर. हाँ जी, we will talk about all these rights. So if you look at Article 19 Clause 1 provides 6 sets of freedom, but Article 19 Clause 2 to Clause 6 talks about reasonable restrictions. What are the grounds on which reasonable restriction can be imposed? There are, these 8 grounds.
sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations within India, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, and incitement of violence. These are the several grounds on which restriction can be imposed, right, on Article 19, Clause 1. Okay? Now come to here. Back, yeah. फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यू रिमेंबर, फर्स्ट सीएए, उसमें 19 का भी बहुत चीजें 19 में जोड़ा गया. आपको पता है 19 आर्टिकल में, हाँ, 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया था. उसमें आर्टिकल 19 में भी बहुत सारे क्लॉज जोड़े गए थे. रीजनेबल, जो वर्ड है रीजनेबल ना, ये वर्ड रीजनेबल भी उसी वक्त जोड़ा गया था. And restrictions like security of state, this, all were added in the through the First Amendment Act. उससे पहले ये सब ग्राउंड नहीं था, बाद में जोड़ा गया था. Anyway, now we will talk about Article 19(1), Clause 1A. ये क्या है? Right to speech and expression. Right to freedom of speech and expression. इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. 19 clause 1A. या सर, आर्टिकल 19(2) क्लॉज 2 क्या है? अच्छा, बेयर एक्ट है आपके पास. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देखिए तो क्या है. It talks about restrictions. Shivani, look at Article 19, Clause 2. It talks about that there can be reasonable restrictions on right to speech and expressions on, right? No, sir, it is right to assemble peaceably and without arms. So, right to assemble what? अरे वो अलग चीज है, वो है Article 19(1) Clause B. I will come later. पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद Okay, sir. I'll come talk about right to assemble without arms. So after, let me talk about this first. Right to freedom of speech and expression. उसके बाद बात करते हैं. हाँ, वो नहीं, कुछ और पूछ रही थी, और वो पूछ रही है आर्टिकल 19 Clause 1B. We'll talk later. Article 19 Clause 2 talks about restrictions now. Yes. So we'll talk about Article 19 Clause B, peacefully without arms. Don't worry. कितना peace होना चाहिए when you gathered at one place, we'll talk about. Don't worry. Now, if you look at freedom of speech and expression are basics in human life. Freedom of speech and expression in basics in human life, right? If you look at Supreme Court has extended the meaning of Article 19(1) Clause A, freedom of speech and expression. Now, if you know that, you have right to speak, but what about silence? Do you have right to silence? Yeah. So one has a right to be silent under Article 19 Clause 1A. Right. What about, right to believe something and right not to believe something? One can have right under Article 19 Clause 1A. Right? If you look at, for example, right to information. Right to information, you have right under Article 19(1) Clause A. For example, you go to vote nota. This is also one of kind of expression. So you can vote nota. And let me tell you, one has right of freedom of speech and expression without fear and favor. One should not have right
fear. For example, when you are posting on Twitter or Facebook or Instagram, you should not have fear, or one should not have fear from the state कि मुझे आके कोई arrest कर लेगा, right? So right to speech and expression is a very essential in any democracy, very essential in any democracy. If you look at, for example, what is, how we can define freedom of speech and expression. Speech and expression has many forms. One may write poem, one may write parcha. देखा ना, मोदी हटाओ देश बचाओ, there are some parcha. One may, draw painting, right? One may write newspaper article, one may write book, one may, talk about. So government cannot impose censorship. Have you heard about censorship? Government can impose censorship only on 8 grounds. There are only 8 grounds. मान लीजिए आपने कोई स्टोरी लिखी and government may impose कि आप नहीं लिख सकते. No. One has a right to speech and expression, and one can write poem. One can write news articles. One can write a story. One can make, drama, play. Play, नाटक. कल या परसों विश्व रंग नाट्य मंच था. World Theatre Day. Have you heard of theatre? थिएटर तो सुना होगा, ऐसा तो मत बोलो सर थिएटर नहीं सुना मैं. Right? So see, one has right to speech and expression in any form, without fear and without favor. For example, you have right to speak on phone call. You have right to speak on phone call, and nobody or state has no authority to tape your phone. आप जो फोन करते हम लोग ना, we have right to call, right, to someone, and the state has no trespass that phone call. पहले स्टेट क्या करता था पता है? फोन कॉल टेपिंग पे लगा जाते थे. अभी भी करती है गवर्नमेंट, राइट? पेगासस सुना है ना? पेगासस किसके सेफ्टी के लिए? सी अब क्या है ना, क्राइम. और ये क्या आपने फोन टेप कर लिया, इट इज नॉट अ क्राइम. देयर शुड बी प्राइवेसी ना, देयर शुड बी प्राइवेसी. अब किसी के व्हाट्सएप में क्या चैट चल रहा है, स्टेट हैज नो राइट टू इंटरवीन, एनक्रोच द प्राइवेट स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल, राइट? So if you look at Article 19(1)(a) is very much related to Article 21(a). Article 21, sorry, not 21(a), 21. Right to life and personal liberty. Right? One has liberty to preserve their privacy. Right? No phone can be trespassed. Right? One has a right to vote on nota. Right? So if you look at Article 19(1) Clause A, has a number of sub-rights, you can say. Right? It involves lots of rights. Right to vote to nota, right to information, right to be silent, right to believe and not to believe, right to express oneself through drawing, through painting, through singing, through writing poem, through writing a story. Right? And if you look at, there is one judgment in 1950. अब जजमेंट क्या आया? 3 केस हुआ, 3 जगह अलग अलग केस हुआ. एक केस था तमिलनाडु का, एक केस था बिहार का, एक केस था पंजाब का. Right? If you look at, freedom struggle, right? Every big leader had their own newspaper, whether it is Gandhi or whether it is Gangadhar Tilak or Ambedkar. Every leader had their own newspaper. है ना? If you look at in 1950, there was one magazine in Patna. The Patna High Court, not Patna High Court, Bihar government imposed some restrictions on speech and expression because some magazine has written something that was repeated in Maharashtra, Tamil Nadu. Government has imposed some restrictions on magazine. It also happens in the
Punjab. Right? So there was a case filed in the court, and one common case is called Ramesh Thapar versus State of Madras case. And Supreme Court has said that Article 19(1) Clause A is a fundamental in all democratic state. And India is a democratic state. Right? IT Bill 2022 curtails privacy. बहुत सारे, not only IT, if you know that the RTI Act 2019 amendment has also diluted RTI. आपको पता है? नहीं पता? You will get it to know. You will get it to know. बताएंगे आपको बाद में. तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं. लिखिए. Right? First point, yeah, right? Freedom of a speech and expression is basic in human life. In human life. One can be free to write, draw, right, play, sing, right, speak without fear and favor. Without fear or favor. But do you think that ये ऐसा होता है? No. Ideally, this is a condition. This is the ideal condition. No one should fear the government, right? And no one should speak in favor of the government. कि मुझे government से कुछ मिल जाएगा, right? आपने देखा है अनुपम खेर को? Since 2014, he has become so vocal, right, in favor of government. Why you need such kind of favor from the state? State must be a neutral. State must be a neutral, right? And it should act impartially to all. Right? Anyway, one can be free to write, draw, play, sing, speak without fear or favor. नहीं, वो 6 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बाद. अब कोई बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रही है तो वो नेशन का क्रिटिसाइज नहीं है जी. Look at the 6. You don't have a right to speak on against this. No one has a right to speech and expression for this all 8. नहीं, देखो ना, नेशन क्या है? सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते आप. बट आप नहीं कह सकते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ. Then why that person has been arrested? Sorry? आप गाली नहीं दे सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते. लिख, I cannot, abuse someone. No one can abuse someone. डिफेम नहीं कर सकते आप. नहीं गलत है ना, सही है, कोई क्या दिक्कत है? अरे मनमोहन हटाओ, मोदी हटाओ, बाबा योगी हटाओ, खट्टर हटाओ, दूसरा बनाओ. What is wrong in that? One has a right to criticize against government and against leader. He is a public leader. One can say Indira hatao, right? This bachao. There is no problem in that. But what happens? Yes, ये ideal condition है जो मैं आपको बता रहा हूँ.
one should have right to free. One should have right to speech and expression without free and fair. And the speech and expression can be in many forms. Maybe you're singing, right? Maybe your play, drama, maybe you're drawing, maybe you're speaking, right? Right? ठीक है, समझ में आया? लिखिए, Article 19(1)(a) also includes Article 19 clause A, that means right to speech and expression. या जब मैं 19(1)(a) हमेशा बोलूं तो समझिए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जब मैं कहूं कि आर्टिकल 19(1)(c), इट मींस राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. ठीक है, समझ में आया? ये कोड वर्ड है. एग्जैक्टली. So Article 19(1)(a) also includes right to be silent, right to be silent, right to information, right to information, right to use social media, use social and new social media, and new social media. अच्छा, सोशल मीडिया, न्यू सोशल मीडिया में क्या अंतर है? एनी आइडिया? एग्जैक्टली, द न्यू प्लेटफॉर्म्स, इवन फेसबुक कम्स अंडर द न्यू सोशल मीडिया, राइट? सोशल मीडिया है टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, रेडियो, दैट इज सोशल मीडिया. न्यू सोशल मीडिया, देयर आर मेनी न्यू प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, राइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और कौन सा? टिकटॉक बैन हो गया. और कौन सा? लाइक, स्नैपचैट, मेनी. यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, फ्रैंक? नो. So Article 19(1) also includes right to be silent, right to inform, right to use social media, new social media, right to vote on nota, right to vote on nota. Right to watch YouTube, है ना? Right to watch, हाँ, new social media, and so on. You can add up number of rights under Article 19(1)(a). ठीक है? कोई हैव यू हर्ड अबाउट डॉक्यूमेंट्री मूवी? 10-10 मिनट का होता है, 25 मिनट का होता है. डॉक्यूमेंट्री जिसे शॉर्ट मूवी, उसका थीम पे होता है. अभी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी को वो मिला है ना, ऑस्कर मिला है इंडियन डॉक्यूमेंट्री मूवी का, राइट? तो डॉक्यूमेंट्री मूवी बहुत सारी होती है, राइट? एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री मूवी है, राइट? एनीवे, नाउ third point you write in this, in Romesh Thapar, yeah, ROMESH, Romesh Thapar versus State of Madras. State of Madras. The Supreme Court held that Article 19(1)(a) is a fundamental, held that Article 19(1)(a) is fundamental
in Indian democracy. इसका क्या मतलब है कि state cannot impose restrictions except the all 8 restrictions that we already discussed. है ना? Right? Right? The Supreme Court also held that the SC also held that there cannot be pre-censorship. There cannot be pre-censorship. Yeah. Pre-censorship means newspaper जब publish होता है उससे एक दिन पहले pre-censorship. ये PRE pre-censorship. प्री सेंसरशिप जैसे कि मान लीजिए कल पब्लिश होगा न्यूज़पेपर बहुत सारे, तो सरकार क्या कहती है, इंदिरा गांधी ने किया था कि जितना भी न्यूज़पेपर पब्लिश होगा सबसे पहले वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, जो भी न्यूज पब्लिश होगा, और गवर्नमेंट उसको क्लियर करेगी, हाँ ये पब्लिश करो, ये पब्लिश मत करो, ये पब्लिश करो, ये पब्लिश मत करो, पहले छांट देगी. दैट इज कॉल्ड प्री सेंसरशिप. सेंसरशिप मीन्स प्रोहिबिशन, राइट? द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्री सेंसरशिप यू कैन नॉट इम्पोज, यानी द प्रेस हैज फ्रीडम टू रिलीज all the news reports, right? They have right to criticize the government, right? Likhiye, in India, press, PRESS, yahan par press means media, huh? Press has freedom under Article 19(1)(a. ये कहा नहीं गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. प्रेस हैज फ्रीडम, whether it is a print media, whether it is a electronic media, or whether it is a social media. Every media has freedom under Article 19(1) clause A. अगर आप यूएस में देखेंगे, यूएस में एक्सक्लूसिवली explicitly लिखा हुआ है. In the US, it is written explicitly that media has freedom under Article so and so. The media has right to freedom of speech and expression. So media can make cartoon. आप देखा होगा कार्टून बहुत बनाती है, right? Media can publish newspaper. Media can issue any poem, poets basically song. Yes, Aman. Presently, the PIB fact check unit is gaining prominence. PIB? Yes, fact check unit. There is a specific unit in the PIB. What is that? It decides that what content is against the country or the nation. Ji. See, PIB decides. Fact check unit. There is a specific. Yeah, so fact check. See, yes, we have rights. We have freedom. At the same time, we have certain responsibility. मेरे पास बोलने का आजादी है. I have right to I have right to freedom of speech and expression. It does not mean I should spread fake. So I have no right to misinform the people. Right? So that is a fact check team. ठीक है? तो हो सकता है, but fact check team doesn't mean it is a restriction on press. So press or media has freedom under Article 19 clause 1. Okay? One more line you write. Article 19(1)(a) is very much
much linked with Article 21. Article 21. Right? Article 19(1)(a) is very much linked with Article 21 because in absence of right to debate and discussion, because in absence of right to debate and discussion, life has no meaning. Life has no meaning. अवनव कह रहे हैं कि yes sir, fact check by government body that can be also be misused. Yes, it can be misused. Government is misusing lots of authority. For example, अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राजीव इसका किसका कौन सा गांधी राहुल गांधी का, इट्स ए प्योरली मिसयूजिंग ऑफ पावर. अब उन्होंने कहा कि मोदी जी नॉट अ कम्युनिटी, मोदी जी नॉट ओबीसी. राइट, मोदी जी ने एक टाइम पे कहा था कि जो एससी कम्युनिटी होता है ये ऐसा होता है. राइट, इट इज अ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में आप ऐसा कह सकते हैं, ही हैड मेड एन स्टेटमेंट राहुल गांधी, but that statement does not attract criminality, defamation, right? But क्या क्या कि प्लॉट लगाइए, हाँ जी इनको डिक्लेयर करो, अब ये इन्होंने डिफेम कर दिया, अब उन डिफेम कोर्ट ने कह दिया डिफेम. जिस दिन डिफेमेशन का उनको सेंटेंस हुआ है उसी दिन उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गया. क्या प्रेसिडेंट के पास सब कुछ तैयार था, आएगा और जो भी हुआ है. So whenever there is an article, there is a lack of Article 19(1) clause A, there is a lack of democracy. Lack of democracy. ठीक है? One has a right to speak any language. You can speak German, you can speak your folk language, right? Under Article 19 clause 1. Right? And that is the importance of Article 19 clause 1A. Got the idea? मान लीजिए कोई डिबेट पूछा आपके पूछ लिया, क्योंकि in the recent decade the Indian government has arrested right activists and newspaper journalists. What do you think about Indian democracy? You can link Article 19(1) clause A, right, with such to the answer. ठीक है ना, इसको यूज कर सकते हैं आप. फाइन, ठीक है. Now, right, PUCL versus Union of India case. PUCL versus Union of India, ये हुआ था 2003 में. वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इस केस में क्या हुआ कि PUCL, पब्लिक यूनियन, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी. PUCL का मतलब क्या है बताया मैंने आपको. इट्स ए पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी. Basically, this is a civil society, took birth after emergency. Emergency में क्या हुआ? Indira Gandhi imposed lots of restrictions, right? It actually violated liberty of individual, arrested, indiscriminately people. उस समय नसबंदी चल रहा था. Sterilization. Have you heard about that? During emergency period, there was a sterilization
and from age of 16 to the age of 60, people were arrested and sterilized, right? और motto क्या था? Family planning. So look at the state. State did lots of restrictions, imposed restrictions on freedom of individual, right? So PUCL actually formed to protect the liberty of individual. PUCL direct वहां चला जाता है, right? It is a good civil society. इसका purpose क्या है? To protect the liberty of individual. Anyway, that is a PUCL. 2003 में केस क्या था? केस था कि PUCL filed a case in the court that every citizen has a right to know about their MLA or MP, their background, right, when they are going to vote. Yeah. So, before citizens are going to vote on ballot box, every citizen must know about their representatives, right? And therefore, the PUCL appealed to the court that you must issue a guideline that each candidate, whether contesting for MLA or MP, must file an affidavit. And that affidavit should disclose information. For example, the educational background of that candidate or criminal background of that, कितना FIR है उसके against में, and about property, what kind of property particular candidate has, right? और liability क्या है candidate के पास. तो Supreme Court ने क्या किया कि एक judgment दिया, and Supreme Court issued a notification that each candidate, it issued notification to the Election Commission, right? कि you must issue a guideline that each candidate must file an affidavit before election, and in that affidavit they must include certain information like educational background of the candidate, criminal background of the candidate, then liabilities, क्या liability कितने बच्चे हैं, and then property. Because each candidate, each citizen has a right to know about their candidate before they elect, before they choose. Got the idea? समझ में आया? Because it comes under right to speech, and because when you go to the vote, it is your expression, no? Whether you vote or whether you don't vote, whether you vote to Nota or you don't, you vote to any other candidate. Who will verify that? Election Commission. शिवानी, क्या होता है जब हम नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, nomination before election, each candidate file a nomination paper, right? So before, when it go to the nomination, file a nomination paper, it submit a affidavit, ठीक है? तो nomination paper के साथ affidavit रहता है, right? For example, you can go to go to the Election Commission website and you can download, candidate information in your constituency. आपको मिल जाएंगे. हाँ, Abhinav, you can also file an RTI to know about your candidate, MLA. Yes. देख सकता है. मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया और and you are not satisfied with your number, you can file an RTI and you can see your paper. 100% देख सकता है. नहीं, you can challenge to the court, you can go to the court कि I have not justified. It is a process. You have to bear pain. But ऐसा देखो 5-6 marks नहीं होता है. You have to set the example. आप सोचोगे कि मोदी जी के खिलाफ में कौन बोलेगा जी? ये कोई पार्टी समझ लेगी, मतलब you are submitting yourself. देखो, I know the person who filed RTI in Bihar, right? And
he taken the BPSC paper. ऐसा नहीं है, 10 रुपीज इज अ फाइन. यस यस यस. सी, ऐसा नहीं कि आरटीआई इट इज बहुत अच्छा है, नहीं होने से अच्छा है. यू कैन फाइल आरटीआई, कैन नो द इंफॉर्मेशन. हाँ, ऑफ कोर्स. फॉर एग्जाम्पल बोलोगे कि सर एक स्टूडेंट क्या करेगा. आपने दोराई राजन का नाम सुना है ना, चंपाकम दोराई राजन. शी वॉज नॉट द एप्लीकेंट, बट उसका नाम, केस नाम देखो ना, आप बोलते हैं PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो वैसे आपका नाम आ जाएगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, लोग पढ़ा करेंगे आपका नाम, राइट. तो ऐसा नहीं कि सारा चीज वैन में जाता है. लेंदी प्रोसीजर है, ऑफ कोर्स. Recently, Supreme Court has set up its RTI portal. Maybe, Priya. सर हमें भी केस करना चाहिए. हाँ, करो. Yes. You file an RTI, then you go to the court. The Supreme Court, the court has already a burden of backlog cases. कितना केसेस है पता है आपको? कितना? 5 करोड़. There are 5 crore pending cases before the court. एक और बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना? तो बढ़ाते रहो. हाँ, मैं आपको जब जुडिशरी बताऊंगा तो बताऊंगा कि इट इज रियली लैक ऑफ इंडियन जुडिशरी या कुछ प्रॉब्लम है इंडियन जुडिशरी के साथ. आपको पता है मात्र 26% कोर्ट है जहां पर कंप्यूटर है इंडिया में. इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग, राइट. देयर आर नो सफिशिएंट जजेस. अगर मैं बता दूं कि यूके में देयर आर 51 जजेस ऑन 10 लाख पीपल. कितना हुआ? 10 लाख, 2 4 5, 10 लाख हो गया ना? हाँ, 260 हो गया, राइट. चाइना में 169 जजेस, इंडिया में 21 जजेस है टोटल ऑन 10 लाख पॉपुलेशन. लुक एट द, देखो ना क्या होगा. एंड देन वो भी एडहॉक जजेस बहुत ज्यादा है. एडहॉक जजेस क्या होता है? टेम्पररी जजेस. उसको खुद ही डर होता है सरकार के खिलाफ कब हट जाएंगे. तो जो खुद डरता हो वो न्याय क्या करेगा जी? है. As per media report, 300 judges controls the higher judiciary in India. And do you know, मैंने बोला ना 5 करोड़ केसेस है, 5 करोड़ पेंडिंग केसेस है इंडिया में. आपको पता है मोर देन 2.5 करोड़ केसेस कहां से आया है? इंडियन गवर्नमेंट ने केस फाइल किया है अगेंस्ट प्राइवेट or against certain judgment. Nowhere in the court the state is a petitioner. In Indian state is a petitioner against some judgment. मान लीजिए आपने स्टेट के अगेंस्ट में केस फाइल किया कि कोर्ट ने आपके फेवर में जजमेंट दे दिया. अब गवर्नमेंट क्या कर दी? आपके अगेंस्ट में फिर से कोर्ट में चली जाएगी. इंडिविजुअल और क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट वही है, करते बुढ़ा जाएंगे. आदमी मर जाता है, फाइल खत्म नहीं होती, राइट. इंडिया में कहावत है, जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड, राइट. अरे आदमी खत्म हो जाता है, न्याय नहीं मिलती. अब जुडिशरी बताएंगे तो फिर बताऊंगा. 2014 नहीं 2019-20 में
एक जज आया था, उन्होंने कहा था कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी को क्रिएट करिए, राइट? दैट नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी विल सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी नीड्स. जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत इट्स लैकिंग. इफ यू लुक एट द बजट एलोकेशन on judiciary in India, it is the lowest. Right? तो जुडिशरी को मत केवल ये कहनी है नेपोटिज्म है जुडिशरी में. There is a high level of nepotism. It is a fact. But it is not that government has no, ऐसा गवर्नमेंट सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, जुडिशरी के पास प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट के पास भी इशू है. मतलब गवर्नमेंट हैज आल्सो क्रिएटेड सम इश्यूज. एनीवे, fine, let me tell you about this PUCL case. लिखे, the Supreme Court has directed the Election Commission the Supreme Court has directed the Election Commission to issue a guideline that each candidate who is in fray, FRAY होता है ये, each candidate who is in fray मतलब जो इलेक्शन कंटेस्ट करना उस लाइन में है, या who is in fray to contest election. fray मतलब हाँ क्यों समझ लीजिए, लाइन समझ लीजिए. who is in fray to contest election should submit an affidavit right, yeah, which includes following information. First, educational background, of the candidate, second, criminal background, criminal cases, against the candidate, third, assets. क्या होता है एमएलए के पास, इस इलेक्शन में उसके पास 10,000 रुपए, नेक्स्ट इलेक्शन में 10 करोड़ रुपए होता है ना. इफ यू लुक एट द प्रॉपर्टी, राइज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एमएलए और एमपी, इट्स अ ह्यूज जंप. लालू यादव को देखिए, खरे एग्जाम्पल है. ये लालू यादव की बात नहीं है. आप जितने भी एमएलए और एमपी है, केवल एक्सेप्शंस मिलेंगे. देयर आर एमएलए और एमपी who had not increased their wealth during their tenure. Otherwise सारा, नीतीश कुमार के पास पैसा नहीं है. अभी सरकार बदलेगी ना, फिर नीतीश कुमार का पता चलेगा कितना पैसा है. हो ही नहीं सकता. Of course, assets. Fourth, liabilities. Liabilities मतलब कितने बच्चे हैं, कितना एज है, क्या पढ़ाना लिखाना है उनको, मतलब मैरिड है या नहीं मैरिड है, वो लोन पेंडिंग एसेट्स में आ सकता है. एसेट में मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड
So, each candidate, submits an affidavit before the election commission in their constituency at the time of nomination. And everyone has a right to know about their MLA, right? That is under Article 19(1) Clause A. ठीक है? हाँ, that was filed during PUCL case. अब क्या है कि phone tapping, I told you that phone tapping was very usual, right? Again, PUCL filed, again this institution filed a case in 1997. Right? There was another case that called POCL versus Union of India case, 1997. Right? It was basically filed in the Supreme Court that no person's telephone should be tapped. It is a violation of Article 19(1) Clause A. Right? The Supreme Court has argued that tapping telephone is a violation of Article 19 Clause 1A. Right? And court has also argued that a state cannot go for a sting operation. Have you heard about a sting operation? Yes, sir. सुना है क्या होता है? Exactly. स्टिंग ऑपरेशन होता है सीक्रेट ऑपरेशन. जर्नलिस्ट अपने आप आएगा और आपके फ्रेंड बन के या आपका वो बन के कि आपकी जो मौसी है उसकी दोस्त की मैं बेटी हूं. Right? You can say that surgical is totally different, You can say that, yeah? You can say that it is a secret attack. And that person may, acquire all the information from you. No, journalists used to do a sting operation. कैमरा को हाँ कहीं लगा करके आपको सारी बातें निकाल लेते. Now, there's no more sting operation. Have you heard of sting operation in the last 4-5 years? आप नहीं सुने होंगे. Right? Because the court has prohibited a sting operation cannot be validated. It is unacceptable. Huh? नायक, yes. वो जर्नलिस्ट होता है और फिर एक दिन के लिए सीएम बनता है और एक ही दिन में महाराष्ट्र चमका देता है. हाँ, और उसके बाद वो फिर से सीएम बनता है. अच्छी मूवी है. जब अरविंद केजरीवाल जीते थे दिल्ली में, everyone was comparing Kejriwal with Anil Kapoor. Right? Let me write again another court case, the POCL versus Union of India case. ये एक केस है, ठीक है? Judgment 1997. The new case 1997. And this one which we have just written. 2003. Yes. 1997. Yeah. लिखिए. Tapping telephone and a sting operation. केस यही था, ईयर बदल जाएगा. स्टिंग ऑफ POCL versus Union of India. केस, या 1997 केस नाम यही रहेगा, ईयर बदल जाएंगे. Tapping telephone and the sting operation was rampant and in India, and it was violation of Article 19(1)(a). The PUCL These are violation of Article 19(1)(a), Article 19 Clause 1 Subclause A. The PUCL filed a case in the Supreme Court. Right? And the court held that Supreme Court held that tapping telephone
अभी पेगासस का मामला आया था, Yes, sir. आपने देखा, The NSO group of is right. बट ये पूरा दब गया, क्योंकि अगर आता तो ये वायलेशन होता इस केस का, राइट? टेपिंग टेलीफोन is a violation of Article 19(1)(a). Rampant, RAMPANT, rampant मतलब बहुत ज्यादा था. कुछ मुझे पूछ लीजिए कीजिए वर्ड, rampant मतलब बहुत ज्यादा. मैं तो बताया कि इसका नाम है पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी. ये ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोटेक्ट्स लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल. आप भी अगर मेंबर बन गए, इट्स अ गुड टू बी मेंबर ऑफ द PUCL. फॉर एग्जांपल, व्हेन पुलिस कम्स एंड अरेस्ट यू, द PUCL फाइल अ केस इन द कोर्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड अरेस्टेड पर्सन. इसका काम ही यही है कि लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना. Yes. I'm not aware about that sting operation. Team, when it was conducted, but that sting operation was published. तो देखना पड़ेगा, right? लिखिए. Second point, the court held that sting operation is unacceptable. Sting operation is unacceptable. Right? It must need a judicial magistrate's permission. Yeah, judicial magistrate permission. Look at Frankie. There is a clause. If judicial magistrate permit you or to the media, they can go for the sting operation, not without it. Right? So there may be, permission given by the court. If first sting operation has been conducted for revealing some very big secret, then also it is illegal before taking the permit. Come again? If the operation is carried out for revealing a very big secret, which is in favor of nation, that would be good, na? Yes, then also it can be declared invalid. Yeah, it can be declared valid, na? For example, media has given a job to explore some secret things which is dangerous to nation. Judicial magistrate may allow media, not media मतलब पूरा media नहीं, a part of media, मान लिया आज तक या Indian Express or maybe The Hindu, go for a sting operation. That sting operation can be carried out. But before permit, without permit, they cannot do it. Without permit, they can go for it. They have to take permission. Yeah, they have to take permission from judicial magistrate. Then they can go for the operation. Yeah. समझ में आया? आज इतना ही. कल फिर एक दो बातें करेंगे. Apart from these restrictions, there are few restrictions. Have you heard about sedition? We'll talk about tomorrow. Sorry? It has been unconstitutional by the Sedition? Not yet. We'll talk about in the next class. Sedition. We'll talk about sedition, then hate speech. We'll talk about it. Fine. So I'll stop here. Sabila, Shivani, Priya, Nikita. Hate speech तो इतना ज्यादा होता है इंडिया में नहीं. Sir, for sedition, the court has frozen the cases.
The Supreme Court has, told to the state that you cannot further file an FIR under sedition. जो भी है वो ठीक है, अब you can't file new cases under this law, sedition law. We'll talk about it in the next class. Okay, Shivani, Shabila, Priya, Nikita, Khushbu, Javed, Anshu, Avinav. See you in the next class.